Hello students, welcome in my channel. Students, in the last lecture we have started about the electronic effect, and in that first effect we are finished, that is the inductive effect. Okay, so in the inductive effect, what are the important things we are discuss? I think you come to know that what is the inductive effect, where this effect takes place, what is electron donating groups, what is electron withdrawing groups, and how this inductive effect takes place in the different chemical reactions. So students, in today's lecture we are going to proceed another one very important electronic effect, that is the resonance effect. So what is the resonance effect that we are going to discuss in today's lecture? So resonance effect is symbolically represented by R. Some important points of the resonance effect we are going to discuss now. So first and very important points, that is in the resonance, it is a permanent type of effect. It is a permanent effect. This is the important point. Firstly, you have to know. Second, again important points here, delocalization of pi bond electron takes place. So in the inductive effect we are discuss about the sigma bond, but now students, very interesting thing, in the resonance effect there is the pi electrons is going to involve in the resonance effect. So very important. Then next, which is again important, here the shifting, instead of the shifting there is a transfer of electrons takes place. So transfer of electrons takes place here in the resonance. So very important again. So in this case there is the transfer of electrons takes place. Then another one, so this particular resonance effect is observed in the conjugated system, means your system should be conjugated. So conjugated system is required. So conjugated system are required for the resonance. So required condition is there. So that is the conjugated system. Then we are going to discuss actually what is the conjugation also. Okay. So these are the important things. After that, there are two types. There are types of the resonance again. So there are two types of the resonance, that is a plus R resonance is there and minus R resonance is there. Keep in your mind, again there is the two types of the resonance also, like inductive effect. Here resonance also having two important types, that is a plus R resonance effect. Again plus R means electron donating resonating effect, electron donating resonance effect, and minus R means electron withdrawing resonance effect. This is again very important students, very important. Now one more point which is very important, a resonance effect is more powerful or dominant, we can say powerful or dominant than inductive effect, So these are the very interesting and very important points based on the resonance effect. So this is the second number of electronic effect on the chemical reactions. We have started the basic concept of the chemical reactions. In that, this is the second effect, which how will be takes place of the resonance effect in the chemical reactions, that we are going to discuss in today's lecture. So resonance effect symbolically represented by capital R. What are the important points students? Let us see once again. So it is a kind of permanent effect, means this effect is a permanent. Okay, so once it takes place, it will be permanent in the compounds. Understand? Now delocalizations of pi bond, very important students, pi bond. So pi bond, actually I told you pi bond is the weak bond as compared to sigma bond, correct? So here
the pi bond is going to involve, means your system should be double or triple bonded. Understand? So if you are going to consider there is a carbon carbon single bond, then there is only sigma bond, but if carbon carbon double bond is there, then there is one sigma and one pi bond is there. So now in this case there is the possibility of the shifting of the pi electrons. Understand? This is very important. So there is the delocalization. Delocalization means that electrons is going to totally transfer, delocalize, correct? So this is another one very important discussion. There is a transfer of electrons. As I told you, in the pi bond there is the electrons which is there, which is directly transferred from one atom to another atoms instead of shifting, because in the inductive effect there is a shifting of electrons are there, but here directly transfer of electrons. So there is directly formation of charges in the resonance effect. This is very important. Direct there is a plus and minus charge is going to form on the atoms. Understand? So very important. And now very important discussions, that is it takes place in the conjugated system. So conjugated system is required. What is the meaning of conjugated? Conjugated means generally in the sense of, suppose you are going to take the benzene ring I am going to show you. So benzene structures, you know that benzene structures, in that there is alternate single and double bonded system, correct? So alternate, if you are going to see, a double bond is there, after that single bond, after that double bond, single bond, double bond, single bond. So such type of conjugated system is required, so that this effect is very important and very easily takes place in this particular conjugated system. Okay, so conjugated systems is required for this particular effect. This is again very important. Next one is the types. So students, there are two types of the resonance effect. How many types? Two types. Like in inductive effect we have studied two types. So here also similar way, there is a plus R effect and minus R effect is there. Plus R means what? Electron donating. Again plus R means, keep in your mind, electron donating resonating effect, and minus R means electron withdrawing resonance effect. So like our inductive effect, this is another one very important discussions we are going to do in this case also. Now another one very important, resonance effect is more powerful or dominant than the inductive effect. So whenever you are going to study the compounds, at that times in the one compound, suppose it shows the inductive as well as the resonance effect, both possibilities there, at that time which effect is more powerful? Questions will be definitely in front of us, correct? So at that times, keep in your mind, resonance is more dominant or powerful than the inductive effect. Means we have to consider about the resonance in this particular case, correct? So we are going to solve the different questions. At that times you come to know that how the resonance is powerful. Okay, so these are the important discussions about the resonance effect, and then we are going to discuss the briefly about this effect. Okay, so I hope whatever be the discussion is going on, you are going to understand here. तो बघा तो बच्चों, आज हमने जो रेजोनेंस इफेक्ट जो चालू किया था, उसमें इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपको डिस्कस की है अभी, कि एक परमानेंट टाइप का इफेक्ट है. परमानेंट टाइप्स का इफेक्ट यानी वो परमानेंटली होता है कंपाउंड में. अंडरस्टैंड? उसके बाद में उसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे साथ में डिस्कस किया कि इसमें डीलोकलाइजेशंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं. डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने वाले बोले तो क्या, वही तो सिस्टम डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर है. तो आपको वो सिस्टम वैसे लगने वाली है, और इसमें डीलोकलाइजेशंस में टोटली शिफ्टिंग होने वाली है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, या ट्रांसफ़र होने वाले है पाई इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, बराबर है. तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं इधर, और उसकी वजह से दोनों एटम में चार्जेस डेवलप होने वाले हैं, बराबर है कि नहीं. एक देने वाला होगा, दोनों लेके जाने वाला, वो तो नेगेटिव बन जाएगा फिर. ओके, सो ऐसे इसमें डायरेक्ट चार्ज हमें मिलेंगे, और इसमें डीलोकलाइजेशंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है. ये ठीक से याद रखना है आपको, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है. इंडक्टिव इफेक्ट में हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम देखा था, करेक्ट. तो ये दो चीज़ आपको इधर क्लियर कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना है. उसके बाद में एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होता है. कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए मैंने आपको एग्जांपल्स दिए है इधर. बेंजीन का एग्जांपल्स अगर आपने सीधा से याद रखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें डबल और सिंगल बॉन्डेड सिस्टम होना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन
इजीली अवेलेबल हो और वो ट्रांसफ़र होता रहे, बराबर है कि नहीं। तो ऐसे इसमें एक चीज़ याद रखना है। और इसमें टाइप्स जो मैंने बताया, इसमें 2 टाइप्स होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन प्लस आर का जो इफेक्ट होता है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेटिंग इफेक्ट बोलते हैं, और माइनस आई का जो होता है तो माइनस आर का जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो याद रखना है, डोनेटिंग और विड्रॉइंग जैसे इंडक्टिव में याद रखा था। अभी उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि रेजोनेंस इफेक्ट ये हेवी होता है, पावरफुल होता है, मोर डोमिनेंस होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। ये भी हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखने वाले हैं कि कैसे रेजोनेंस इफेक्ट ये पावरफुल होता है। अंडरस्टैंड। तो ये कुछ बातें थी इसमें याद रखने के लिए। हाँ, और एक चीज़ मुझे बताना है आपको, जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि जैसे चेन बड़ी बड़ी होती जाएगी तो इंडक्टिव इफेक्ट कम कम होता जाता है। आफ्टर 3 कार्बन्स हमने बताया था कि वो नलीफाई हो जाता है या कम हो जाता है। तो इसमें वैसा कुछ नहीं, अगर आपका सिस्टम कॉन्जुगेटेड होता रहेगा आगे तो ये रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता रहेगा। तो इसमें ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है। अगर उसमें कंडीशंस एक ही है कि वो कॉन्जुगेटेड में होने चाहिए बॉन्ड। तो कॉन्जुगेटेड अगर सिस्टम होगा तो इसमें ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि 3 कार्बन आइटम के बाद में वो जो इफेक्ट है वो कम होता जाता है या नलीफाई होता है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है वैसे। तो इसमें अगर सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपका बराबर चल रहा है तो कितना भी लंबा चेन रहेगा तो उसमें ट्रांसफ़र होता रहेगा। ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट बातें रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, व्हाट इज़ द रेजोनेंस इफेक्ट एंड व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रेजोनेंस। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे तो इसके टाइप्स देखने वाले, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में विथ एग्जांपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो कीप वॉचिंग द चैनल, कीप शेयरिंग द चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।